नमो सर्वेभ्यः। तो हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करके सबका अभिवादन करके मेरा वक्तव्य शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले कुछ स्पीकर ने बोला है कि हिंदी में कमज़ोरी बोले हैं, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। मैं कभी हिंदी सीखा नहीं हूँ, तो मेरा भी हिंदी इंग्लिश से इंटरस्पर्स हो जाएंगे। तो आप पहले ही मैं क्षमा प्रार्थना करके शुरू करता हूँ। तो आज का विषय है कि क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम फॉर संस्कृत। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले बात है कि क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम संस्कृत के लिए ज़रूरत भी क्या है। हमारे पास गूगल है, अभी चैट जीपीटी भी है, तो ये ज़रूरत भी है कि नहीं, तो पहले वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अर्जुन का पिता कौन है। ये आप लोगों के प्रश्न नहीं है, ये कंप्यूटर के हम लोग प्रश्न किया है। और अगर इंग्लिश में करेंगे तो जवाब ठीक आ रहे हैं, किंग पांडु। अगर यही सवाल आप संस्कृत में करेंगे तो कोई जवाब नहीं आते हैं, जबकि ये पहले संस्कृत में ही लिखा हुआ था, फिर भी संस्कृत में जवाब नहीं आते। ये सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2022 में। तो आप देखिए इंग्लिश जो है वो थोड़ा एडवांस्ड हो गया, थोड़ा और बेहतर हो गया, एकदम जवाब देते हैं। संस्कृत में कुछ नहीं हुआ, अभी भी वही हालत है। और थोड़ा आगे जाते हैं, फिर भी वही बात है, कुछ नहीं आता है। वैसे कि उल्टा मतलब जो संस्कृत का राइट साइड आप देख रहा है यहाँ पे, अर्जुनस्य दर्शनामानि, मतलब कोई संबंध नहीं है, ऐसे आ रहे, बस अर्जुन कीवर्ड उनको समझ में आ रहा है, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हुआ गूगल सर्च। अब देखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबको पता है कि सब कुछ सॉल्व कर दिया है। वैसे वो इंग्लिश में शायद सब कुछ सॉल्व कर दिया है, वो भी नहीं किया है, बट संस्कृत का क्या हालत है। संस्कृत में आप क्वेश्चन पूछिए, अर्जुनस्य पिता कह। बहुत ही सिंपल संस्कृत है, जिनको संस्कृत नहीं भी आता है वो भी समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या है। अब उसका उत्तर देखिए, अर्जुनस्य पिता का नाम राजा पांडु था। तो ये क्या हो रहा है, ये संस्कृत भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, लेकिन ये इसको बोलते हैं, टेक्निकी शब्द होता है इसका हेलुसिनेशन, चैट जीपीटी का। ये क्या हो रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट समान है तो उसको समझ में नहीं आता है कि एक ही स्क्रिप्ट से मल्टीपल लैंग्वेजेस कर सकते हैं। और ज़्यादातर कॉर्पस जो है वो हिंदी में है, तो उसके लिए वो हिंदी का आ जाता है। तो आप ये बोल सकते ठीक है, आप संस्कृत की बात छोड़ो, हिंदी की बात छोड़ो, चलो तुम्हें कम से कम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो तो मिल गया, राजा पांडु तो मिल गया। अब जैसे भी है तुम्हें तो समझ में तो आ गया, तो इतना क्यों कर रहे हो। तो ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब अर्जुनस्य पिता के बदले में हम पूछते हैं कस्य पिता अर्जुनः। तो क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, उनको तो समझ में नहीं आता है, वो तो वही आंसर देते ही जा रहे हैं ना। तो उनको ये जो कस्य पिता बनम अर्जुनस्य पिता, ये जो डिफरेंस है ये समझ में नहीं आता है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। और अगर गलती से समझ भी आ गया जैसे पहले वाले पे, तो वो भी वो हिंदी में और संस्कृत में मिक्सचर करके आते देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात यही हो रहा है कि संस्कृत का कोई अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी में बिल्कुल नहीं है। तो बीच में ऐसे सुनाई दे रहा था कि गूगल ने अभी ट्रांसलेशन कर दिया संस्कृत का, तो सब संस्कृत कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्ट खत्म हो गया, अब तो सब गूगल कर ही रहा है। तो वो बिल्कुल ही बात नहीं है, तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसरिंग करेंगे। अभी इस स्थिति में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप सिंपल क्वेश्चन करेंगे। डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इतना सहज क्वेश्चन भी है वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। अब बात आते हैं कि इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। सो वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। सो गूगल सर्च एसेंशियली दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इसको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग में आपको समझना भी है, क्वेश्चन भी समझना है, सर्च भी करना है, उसको फॉर्मुलेट भी करना है ऐसे। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में आपको शायद उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वो उत्तर उठा के लाना है, सामने एकदम बोलना है कि उत्तर क्या है। तो ये सब कंप्यूटर साइंस की बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। अब जो है चैट जीपीटी एटसेट्रा, बट द
आई थिंक द बिगर पॉइंट इज दैट हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। संस्कृत में ये तो बोला जाता है ना कि अब चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर आपका मनन नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा हालत वही है। चैट जीपीटी ये चाहे जितना भी आप पढ़ लीजिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। नो अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग इज द की वर्ड। अब उसको कैसे आएंगे, तो हम लोग सोचा है कि हम लोग एक कंप्यूटर साइंस की एक टूल नहीं, एक डेटा जो बोलता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसको बोलते हैं नॉलेज बेसिस। नॉलेज बेस का मतलब अब समझ ही गया, डेटा बेस जहाँ पे डेटा रहता है, नॉलेज बेस जहाँ पे नॉलेज रहता है, बस और कुछ नहीं है। इसको लेके हम लोग बहुत कुछ सॉल्व करेंगे। अब नॉलेज बेसिस इंग्लिश में है, देयर आर ऑटोमेटिक टेक्निक्स टू बिल्ड इट, आई मीन एंड क्वेश्चन इट एटसेट्रा, बट दिस इज द भारतीय भाषा के लिए इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जबकि संस्कृत में इतना वास्ट एंड वैरिड लिटरेचर है, इतना सिमेंटिकली रिच है, तो इसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यही हमारा उद्देश्य था कि संस्कृत में क्वेश्चन आंसरिंग क्यों करें। तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि हम संस्कृत को संस्कृत ही रखेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करेंगे। संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछेंगे, संस्कृत में ही नॉलेज बेस करेंगे, संस्कृत में ही उत्तर देंगे। ये कर पाते हैं कि नहीं, दैट वाज द मेन पॉइंट। तो अब आते हैं कि अब मैं बोलते जा रहा हूँ ट्रांसलेशन क्यों नहीं करता है। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सबके बहुत सारे ट्रांसलेशन है, कमेंट्रीज है, सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। एक तो सबका नहीं है, पर फिर भी चलिए ज़्यादातर तो है, एटलीस्ट वैदिक कॉर्पस जो बोलते हैं हम लोग, उसका तो है। तो एक तो अब सबको पता है कि ट्रांसलेशन इज नेवर 100% करेक्ट। संस्कृत का वर्ड का जो नुआंसेस होता है वो तो नहीं आएगा। फिर भी आप बोलेंगे अरे नुआंसेस छोड़िए, कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग तो हो जाएगा। अब देखते हैं वो कैसे होता है। तो एक है, ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ फेमस ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत है, आप पढ़ सकते हैं। उग्रश्रवा द सन ऑफ लोमहर्षण सारनेम सौती वेलवर। ये जो ट्रांसलेशन किया गया था, ये संस्कृत का एक एक श्लोक, एक एक शब्द लेके, मतलब ये भावानुवाद नहीं है, लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अगर इस पे आप पूरा इंग्लिश का सब टूल चला देंगे तो आपको महाभारत का क्वेश्चन आंसरिंग तो सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, ये जो स्पेसी है, जो स्पेसी टूल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टूल है। इसको अगर आप चलाएंगे, और एक बहुत ही छोटा काम हम लोग इसमें दिया था, दिस इज कॉल्ड नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें जो नेम्ड एंटिटी है, जो बेसिकली हमारा जो इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और उसको कैसे नेम्ड एंटिटी है उसका। तो आप देखिए, उग्रश्रवा, it thinks this is an organization, not a name, not a name of a person. Lomaharshan, it thinks it's a geopolitical entity. I have no idea how it does that, seriously. But it thinks it's a geopolitical entity, just like Palestine is. So, Sauti, चलिए, person पकड़ लिया, पुराण को person बोल रहा है. This is a much more deep philosophical thing than what we have thought. पुराण को person मान रहा है. And it does a lot of mistakes actually. It's not that the mistakes can be ignored. So just translation देके, just English tools करके ये problem solve होने वाला नहीं है. And we did some very interesting studies. Basically आप अगर sentence में John रखेंगे या Jack रखेंगे and you do it, parse it through the English thing, it gives you a correct output. और John को आप लक्ष्मण कर दीजिए, it fails. And you can quote me on this. I can show you proof. So एक ही sentence है, John is eating a mango. It understands and it can do all these things. If you say Lakshman is eating a mango, it cannot. Why? So there are many of these cultural things that is hard-coded in this English parser. John and Jack have proper names that is built into it. Lakshman इसे समझ में नहीं आता है. As good a name as Lakshman. This is of course a couple of years back. I do not know. Maybe you can now understand Lakshman, but maybe not some other names. Okay. So knowledge graph. So knowledge graph हम लोग कर रहे हैं. What is a knowledge graph? These are essentially nodes and entity, nodes and relationships. So हर जो information है, हम लोग एक triplet की तरह इनको encode करेंगे. What is a triplet? There is a subject, there is a predicate, and there is an object. Example. For example, if I say Arjun has son Abhimanyu, so this is a triplet. This information, Arjun का पुत्र अभिमन्यु है, this information can be encoded as a triplet, correct? And then you can represent it pictorially like Arjun, उनका पुत्र, the arrow mark is important, किसका पुत्र कौन है वो important है.
But you can capture this. Once you capture this, then you can do a lot of objective question answering you can do. And it's not just that simple, but we'll see. So the basic problem is, given a text, एक संस्कृत में टेक्स्ट, कैसे ये ट्रिपलेट आ जाए आपके पास, कैसे करेंगे? And relationships are, sometimes it is domain specific, so जो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसके ऊपर है, sometimes it's not. And then, but there are many of these things. For example, if you just look at human relationships, so the first study we did is just on human relationships. So we will ask questions on only who is father of whom, who is maternal uncle of whom, iska ye kaun hai, okay, just that. And then we realized that many of these things are, of course, ये जो पिता शब्द का जो अर्थ होता है और जो पिता किसको बोलते हैं, that is not specific to Mahabharata or Ramayana, that is pita everywhere. So there is this corpus independent work, correct? But then there are problems in the sense that for the same concept, there are multiple synonyms. So what is Putri and Duhitri and Tanaya are the same thing. So you have to capture that. And then there are some implied relationships. What is an implied relationship? अगर मैं बोलूँ कि अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु है और मैं आपसे पूछूं अभिमन्यु की पिता कौन है, तो for humans this is very obvious, very natural. Is it obvious for a computer? You have to encode this fact that पिता का इनवर्स रिलेशनशिप पुत्र होता है. अब पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकते हैं. कैसे पता चलेंगे? आपको जेंडर इनकोड करना पड़ेगा, करेक्ट? एंड फिर ऐसे अब सोच लीजिए कि ब्रदर एंड सिस्टर आर दिस बेसिक रिलेशनशिप्स? एक्चुअली नहीं है. ब्रदर किसको बोलता है? इसको एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स इज कॉमन, राइट? एंड यू नो दिस महाभारत एंड रामायण, this is not just a single father and a single mother. There are lots of complications. So any of the parent and you take any of their offsprings and then that is also a brother or sister. So there are these implied relationships and inverse relationships, okay? Then there are compositions. Matul हम किसको बोलते हैं? Matul है माँ, then bhrata, right? So nobody will probably, I mean, it may be somewhere said that the matul of this person is this. Otherwise it may be said that the mother of this person, so mother of X is Y and brother of Y is Z. Therefore, you have to infer this, that Z is matul of X. So this has to be built into the computer, right? This is not going to be mentioned in any of the text. So this is called world knowledge. This is outside Sanskrit language. You have to do this. And then there are recursions, right? Any ancestor of ancestor is also an ancestor and it can go on. So Bangsaja. अगर मैं रघु वंश का सब कुछ चाहिए तो होते चलते रहेंगे, right? So these are basically the issues that we did. And then here is an example that we wanted to do. Take a line from Mahabharata, Viratasya Duhita Uttaram, all these things. We do a Sandhi Samaj splitting. Then we actually do this analysis. These are all from automatic tools that is coming. And we get this triplet, कि विराट की पुत्री उत्तरा है. अब पुत्री की inverse भी हम लोग store करके रखा है, Matri and Pitri. So then we have to also see that Uttara ka Pitri Virat hai, right? So we can infer. And therefore we get this, snippet. Then what is the, okay, so the other thing that question comes is that, okay, what is the whole point? You can only read this line and can understand. The problem is sometimes the information is not in the same place, right? So for example, here there are two slokas. One is 1.63, the other is 1.79. And they are connecting the information. So only through this knowledge graph kind of things, you can connect the information and can query this. So the first one is connecting that Puru ki bharya patni hai Kaushalya, and then Sarmishtha ka putra hai Dhruyu, and all of these things, right? So this whole connection is made, correct? And you augment it with inverse relationships. Now you can ask different questions. So for example, now you can ask Puru ki bhrata kaun hai? See, it's not mentioned anywhere that Puru ki bhrata ye hai, but it is mentioned that Puru ki maa ye hai, maa ki dusri putra ye hai. So you infer. And similarly, Kaushalya ka sasru kaun hai, ye not mentioned directly, but you can now answer. So that's the whole point of why a knowledge graph is a good structure for doing objective questions. Okay, and these are composition rules and all of these things. So we tried to do this automatically, and essentially, without looking at the numbers, just look at the last number. We were 50% correct. That also not very complicated questions. So 50% correct. It's up to you whether you are happy with 50% or not. People generally are not happy with 50% in computer science, right? So also we were also not happy. So
That's the thing. And we analyzed why 50%, that is 50% of these are wrong. What are the kinds of mistakes? The first is errors in parsing the question. The question is also a natural language question in Sanskrit, correct? So if this question is Karna Arjunaya kaha sambandha, so this is a twisted question, right? I'm not saying give me the brother of Karna or give me the brother of Arjuna. I'm saying between Karna and Arjun, what is the relationship? So that template is hard. So you have Karna and Arjuna, you have to kind of find the connection between it. So this was not handled in the initial phase. This was unhandled. But now you can say that once you get a question, you can handle it. That's the trick computer scientists do, right? Once it knows what is the error, it will encode it. But how can you keep on playing this game, right? So you give me one question, I said, oh, please come back tomorrow, I'll answer this. Another question, okay, please come back day after tomorrow, but has to be some automated method, right? If found. So it's difficult to be exhaustive, I cannot do this. Then errors in answering, so Hanumataha Pitakaha. This question, now look at this interesting thing. So we understood the question very well, Hanumat ka pita pitri kaun hai, but we couldn't answer it because in the knowledge graph we had this thing, this Maruti ki pitra pavan hai. अब कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि मारुति and हनुमत एक है, वो भी तो बताना पड़ेगा. How is that? How do we know that? That is again another information, either you know from other text that is not mentioned directly in Ramayana, or you do a Sanskrit analysis. See, for example, Janaki. If I say Janaki, you will do a Sanskrit analysis to find out that ये जनक की पुत्री है. But that is not there in the text. Nobody writes that Janaki matlab Janak ki putra. Not in the Ramayana, it's not written. This is a Sanskrit rule that is somewhere there. So you have to encode all of that. So similarly, so these are the things. So now you have dictionaries, history, all these rule-based things can help. Then there is errors in triplet identification. Of course, nothing is completely correct, but these are the things. And then there is no evaluation data set. The biggest problem that we faced is that we have to evaluate our own work. So I am doing something and then I am saying, oh, this I should have done better. But there is no benchmark, essentially. So how to do it? Then we are depending a lot on automatic analysis of many of these tools. The tools are mostly correct. But see, the problem is that we are using a set of tools in pipeline, in one after another, है ना? तो एक tool का ये this is a very very easy principle. एक tool का अगर 90% correct है, दूसरे tool 90% correct है, अब दोनों एक साथ use करेंगे तो 81% correct हो जाएंगे, 90% times 90%. ऐसे 5-6 tool use करेंगे, even if they are 95% correct by themselves, you very quickly hit a number very low, and that's what was happening. So एक का error दूसरे correct नहीं कर सकते, लेकिन उसका error कर सकते हैं ना. So ये चंद्रिका was actually oversplit, correct? And we could not, I mean, these are all automated tools, right? So we could not do anything. And then these are many other problems. So one is the Sandhi Samaj splitting, one is this exactly finding out what the root word is and what the cases are, etc. So the whole point that we then realized is that for question answering, if you want to do really good question answering, then the way to go forward is manual annotation. This is one important take-home message. So if you forget everything about the slide, just remember the last line. Okay? Everything about the whole talk, just remember the last line. The manual annotation is necessary for accurate and reliable solutions. If you really want a good solution, manual annotation currently is the only way to do it. I'm not saying this will be the only way in future also. Tools are improving every day. But right now, that's the thing. And therefore, what we then changed our focus to do these annotation tools. Now, how do you do an annotation? It's very easy to say human annotation, but ठीक है. अब जो एक व्यक्ति संस्कृत जानते हैं, पंडित है, उनके पास में रामायण का प्रिंट आउट ले गया, तो फिर उसके बाद कैसे करेंगे एनोटेट? तो ये हमको इंफॉर्मेशन चाहिए सॉफ्टवेयर में ना, तो उसके लिए टूल बनाना पड़ेगा. तो वही हम लोग टूल बनाया. टूल्स में क्या चाहिए? देखिए, दिस टूल्स आर मोस्टली फॉर संस्कृत एक्सपर्ट्स हु वी हैव टू एज्यूम दैट they can of course operate a computer, but they will not be very savvy in computer. तो उनको तो एक easy tool देना पड़ेगा, और जो information चाहिए वो information जल्दी से put करने का, जल्दी से input करने का व्यवस्था करना चाहिए. So and वो वेब डेवलपमेंट ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि ये आप सॉफ्टवेयर ये और ऐप आपके फ़ोन पे डालिए फिर कीजिए, ऐसे नहीं है. सब ब्राउज़र बेस्ड है. आप बस खोलिए, जहाँ से भी खोलिए, जैसे भी खोलिए, आपका स्थिति एक ही रहेंगे. आप घर से एक
श्लोक को एनोटेट किया, दूसरे दिन ऑफिस आया, वही श्लोक आपको दिखेंगे, उसका पूरा बाकी एनोटेशन खत्म किया, ये सब फीचर्स है. And basically all those things. But also, what is the task that we need that needs to be specified? So जो भी task है उसके specific annotation करेंगे. So we have basically two tools. One is संग्राहक. I'll forget about all of this. I'll just show you the interface. So you can see this interface. So एक corpus load करेंगे, उसका हर एक का line वो आ जाएंगे सामने with its analysis. Now the analysis may be right, may be wrong. This is automatic analysis. But you can look at the analysis, and if it is, I mean, you can take help of this. You can also correct it, or you can just copy it. And you actually put what the entity is. So, आप put करेंगे Ram as an entity, it is a person. And then entity, हाँ? थोड़ा सा zoom. Actually, बस आपको ग्राफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वही है काफी. बस बाकी वो है कि उस पे राम लिखा है, या नाम राम क्या लिखा है, अच्छा कुछ और लिखा है, जो भी है. बट ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी चाहे, ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो एंटिटी, इसके रिलेशनशिप, अभिमन्यु, पुत्र, अर्जुन, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट डाउन. एंड वेरी इजी, जस्ट से कन्फर्म, यू जस्ट से टिक, एटसेट्रा, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. This example is for Ayurveda. We have done an extensive annotation of Ayurveda. You can do this, okay? And so the Ayurveda thing is already up. You can just look at this. That's fine. I'll again just save time. We have all these knowledge graphs built on those things. Then one of the important things that we faced while doing this is that again annotation requires some computer science solutions to this. For example, this is again from Ayurveda. If you just do this, Mugdha Bahuvida. So basically some substance called Mugdha, it is a multiple types. And how are you distinguishing them? One is Shwama, one is Harita, one is Pitaka, all of these things, right? One is Sheta, all of. So these are variants whose only color is mentioned, but the name is not mentioned. So for example, if I say Harita, Mugdha, there is no another name for it. It's just like हमारा जो बोलते हैं ना red chili and green chili, जो अलग अलग नाम नहीं है. अब जो last line is पूर्वा पूर्व लघु स्मृतो. So one is better than the other in some property. How do you annotate that? Because you do not know the name, correct? So what we introduced is something called an unnamed entity. Unnamed entity is just, you say x1 and x2, but with an identifier, the correct identifier, so that it's always going back to that Harita. Basically, it's a name, it's like a shorthand name for this, saying that it's a Harita, Mugdha, or all of these things. And this we needed to do. The other thing is synonym, and this is again a computer science problem. So synonym of, so एक ही वस्तु का बहुत सारे नाम हो सकता है, हाँ? And ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब A का नाम अगर B है तो B का नाम भी A है, और ट्रांजिटिव भी है. अगर A का सिनोनिम B है और B का सिनोनिम C है तो C A का भी सिनोनिम है. अब ये बात तो ठीक है. तो ऐसे हमारा श्लोक पे एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द डेटा. So you get this, and you get this property that Ushna is a property of Rajika. Now the question is, अब चिनका का हर एक properties बताइए. तो Ushna should be listed. क्यों? क्योंकि चिनका and Rajika are synonyms, right? किंतु आपको पता कैसे चलेंगे? पता कैसे चलेंगे मतलब आप ये कर सकते हैं कि अब ऐसे एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है? इसमें उष्ण जो चिनका है उससे आप सिनोनिम ढूंढिए, फिर सिनोनिम ढूंढिए, फिर सिनोनिम ढूंढिए, सबको कलेक्ट करते रहिए. व्हाट वी डिड इज दैट इन सबके बदले में एक नाम चूज किया ऑफ दिस वी कॉल द कैनोनिकल नेम, द नेम विच इज द मोस्ट कॉमन और विच हैज गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज. बाकी सबको उसको सिनोनिम बना दिया. तो ए बी सी, ए सिनोनिम ऑफ बी, बी सिनोनिम ऑफ सी, सी सिनोनिम ऑफ डी, ऐसे चेन नहीं रखे, मैं सब कुछ ए बोल दिया. सो B is synonym of A, C is also synonym of A, so C to B connection is lost. D is also synonym of A. This connection is lost, but it can be always inferred. So any question that comes on D, you can always go to A. Any question that comes on C, you can always go to A. And this is lossless, right? कभी अब इससे कभी कोई नहीं होगा. And we showed that this actually improves the querying and all of these things. है तो ये है. अब इसके बाद और एक चीज हम लोग देखा कि संस्कृत श्लोक में एक बड़ी समस्या है क्योंकि हम लोगों का संस्कृत पढ़ना नहीं आता है ठीक से. संस्कृत का श्लोक जो है वो सेंटेंस नहीं है. हमारा पूरा NLP टूल जो है बेस्ड ऑन सेंटेंसेस, वेरी नाइस.
has spoiled us. वर्ड के बीच में ये रहेंगे, फिर वर्ड के अंत पे फुल स्टॉप रहेंगे, कॉमा रहेंगे, ये संस्कृत में कुछ नहीं है. तो आप जब ये करने बैठेंगे, एनोटेट करने बैठेंगे, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा श्लोक कहाँ है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज समथिंग कॉल्ड sentence boundary detection and the अन्वय problem. All of you know this, right? The words are not in the format that we are used to in any other languages. The words can be in anywhere for chanda and for different things. This makes annotation बहुत कठिन हो जाता है इसको, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि ये श्लोक यहाँ पे थे, उसका अन्वय ऐसे था. तो first task that we did is to do this two, introduce these two tasks. पहले आप sentence boundary mark कीजिए. Sentence boundary mark ये है, ये जो है ना कि ना रोचते, all these things, then you see this hash, maybe you cannot see, but just believe me, there is some hash. ठीक है? So that ends the sentence. The next sentence starts after this. This is the first time that there is any annotation tool which does this. And once you do this, then the next thing is taking only that from from one hash to another hash, because that is a sentence now. Now you do the अन्वय of it. Now you do the word ordering. So here you can just essentially click and drag to make the word order. And you can also do this sandhi sama splitting and all of these things. See, for example, Rajya Sriyam is being split as Rajya and Sriyam. So you can either choose कि राज्य श्रियम रहे और राज्य एंड श्रियम को निकाल देते हैं, और राज्य एंड श्रियम अलग अलग वर्ड से रहे और राज्य श्रियम एज ए कॉन्जंक्ट वर्ड निकाल देते हैं. सो ऑल दिस फीचर्स आर देयर. दिस मेक्स इट मच इजियर फॉर टू एनोटेट. दैट्स ऑल. And this Antarlekhak can do a lot of NLP, computer science NLP tasks. This, if people are using this more and more, the benchmarks, the corpus, the whole tool thing, that will be very good. So this can be used for other NLP people. This will build, essentially this is building resources. These tools will be building resources. And that's about it. So question answering is a relatively unexplored field, but knowledge graphs provide a good solution. It can do a lot of things. And the annotation tools are all available, and this will help in development of lot of NLP algorithms. धन्यवाद बहुत. थैंक यू आप सभी को. नमस्कार. नमस्कार.